आमे पूर्व क्लास रे पढ़ुଥିଲେ कॉम्प्लेक्स नंबर रो इमेजिनरी क्वांटिटी ऊपर अगेन सेठू ही स्टार्ट करिवा। ताले राइट डाउन फर्स्ट होची आई जार वैल्यू पड़िथिले रूट ओवर ऑफ -1 तने जोठी रूट ओवर ऑफ -1 आसीबो ता प्लेस रे हमें आई मेंशन करिवा। ओके मु पूर्व क्लास रे कहितली कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िबार उद्देश्य कोन ना किछि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करिवा। ओके नेगेटिव नंबर रूट ओवर कैलकुलेशन करिवा पई एथ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ता पढुछु। ताले मु लास्ट क्लास रे आई रो ऊपर बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेइथली प्रॉब्लम भी पढ़ेइथली। ओके बर्तन हमें सेठू ही कंटिन्यू करिवा। राइट डाउन नोट 4 स्टार्ट करिवा। नोट 4 ता थिला या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 by i 1 by i रो वैल्यू ता हाउ मच ता माने जो प्लेस रे 1 by बड़ो जो प्लेस रे 1 by i आसीबो सेठी हमें कोन लिखिबा ना 1 by i इज इक्वल टू 1 by i into i by i तो दिस इक्वल टू कोन कली ना ऊपरे गोटे i मल्टीप्लाई करिछि तळे मध्य गोटे i डिवाइड करिछि। ओके ऊपरे i टे मल्टीप्लाई करिछि तळे i टे डिवाइड करिछि। ताले बर्तन ऊपरटा हे गला 1 into i न्यूमरेटरटा होछि 1 into i डिनोमिनेटर होछि i into i दिस इक्वल टू i by i स्क्वायर। ऑलरेडी हम जानिछु i स्क्वायर वैल्यूटा होछि -1 ताले इन द प्लेस ऑफ i स्क्वायर हमें लिखिबा -1 तमन दिस इक्वल टू i by -1 दिस इक्वल टू -i तामाने जो जगह रे 1 by i आसिला ता प्लेस रे हमें पुट करिबा -i अगेन 1 by i क्यूब दिस इक्वल टू हाउ मच 1 by i क्यूब एग्जैक्टली सेम एज अबव ऊपरटा को जेमिति सॉल्व करिचे 1 by i क्यूब टा को मध्य एग्जैक्टली सेम सॉल्व करिबा केमि ताले ना दिस इक्वल टू 1 by i क्यूब मल्टीप्लाई करिचे i डिवाइड करिचे i ताले न्यूमरेटर टा बर्तन हे गला i डिनोमिनेटर टा हे गला i टू द पावर 4 दिस इक्वल टू i by i टू द पावर 4 जगह रे 1 लिखिबे सो दिस इक्वल टू i by 1 हाउ मच i ता माने 1 by i जगह रे हमें -i पुट करिबा 1 by i क्यूब प्लेस रे हमें i पुट करिबा। ओके आकु नै कि जोडे क्वेश्चन बर्तन हम सॉल्व करिबा। राइट डाउन क्वेश्चन find the value of i to the power 25 plus 1 by i to the power 19 or whole to the power 4 how much find the value of i to the power 25 plus 1 by i to the power 19 रो होल पावर 4। ओके पिले हमें गोटे फार्मूला पढ़ी थिले BOD MAS फार्मूला टा थिला BOD MAS ता माने या थिला ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन तामाने हमें फास्ट ब्रैकेट भितर जहा अछि ताकू सॉल्व करिवा तापरे ब्रैकेट भितर डिवीजन थिबो डिवीजन को सॉल्व करिवा तापरे मल्टीप्लिकेशन हबो तापरे एडिशन हबो तापरे सब्ट्रैक्शन हबो
एई प्रिंसिपल टाकू यूज करी कि आमे क्वेश्चन टाकू सॉल्व करिबा ओके ताहले फर्स्ट ब्रैकेट भीतर अछि I to the power 25 plus 1 by I to the power 19 ताहले I to the power 25 को आमे केमिति सॉल्व करिबा ना आमे फर्स्ट 25 को 4 रे डिवाइड करिबा 25 को 4 रे डिवाइड करले देखिबा मु कहिथिले पूर्व क्लास रे रिमाइंडर जहा रहिबो I रो पावर सेया हेजिबो रिमाइंडर यदि 2 रहिबो फाइनली आंसर I रो पावर 2 हबो रिमाइंडर यदि 4 रहिबो 4 तो रहिबोनी काइना 4 रे डिवाइड करूचे 3 रहिबो किंबा 2 रहिबो किंबा 1 रहिबो किंबा 0 रहिबो ताले एठी 25 को यदि मु 4 रे डिवाइड करूची ताले आंसर आसीबो I to the power 1 प्लस 1 by I to the power 19 अछि 19 को 4 रे डिवाइड करिबा डिवाइड करले रिमाइंडर माने भाग शेष जहा बळिबो I रो पावर से हे जिवो 19 को 4 रे डिवाइड करले भाग शेष 3 बळिबो 4 into 4 16 plus 3 19 ताले 1 by I क्यूब रो पावर 4 दिस इक्वल टू I प्लस जस्ट टिके पूर्व कही 1 by I क्यू रो वैल्यू नोट 4 रे लिखिथिली ओके 1 by I क्यू जगह रे आमे लिखिबा I ताले दिस इक्वल टू एटा हला रो पावर 4 दिस इक्वल टू I प्लस I हला 2y रो पावर 4 दिस इक्वल टू 2 रो पावर 4 into I रो पावर 4 2 रो पावर 4 टा होची 16 I रो पावर 4 टा होची 1 ताले आंसर हे गला 16 राइट डाउन लेखो सही टाइप रो आ गोटे क्वेश्चन दउची राइट डाउन write down find the value of I to the power 125 plus 1 by I to the power 123 to the power 4 equal to how much solve it एटा को सॉल्व करो आंसर केते होची को हे गला ताहले कोन करिबा ना दिस इक्वल टू हाउ मच 125 को हमें 4 रे डिवाइड करिबा 125 को 4 रे डिवाइड करले रिमाइंडर माने भाग शेष 1 रहिबो तणो एटा हला I प्लस 1 by I to the power 123 को 4 रे डिवाइड करिबा
123 को 4 रे डिवाइड कले भाग शेष केते रहिबो ना 3 रहिबो I to the power 3 to the power 4 this equal to I plus एटा हे गला 1 by I q रे वैल्यू ऑलरेडी कहितली I and this equal to the power 4 this equal to 2y रो power 4 this equal to 2 रो power 4 into I रो power 4 this equal to 16 I रो power 4 टा होची 1 16 into 1 equal to 16 write down को माने आ पूर्व क्लास रे आसी नथिलो आज फर्स्ट टाइम आस मैथ क्लास पे हाथ देखिलो ठीक है ओके देन राइट डाउन नेक्स्ट write down a question if a equal to 1 plus I by root 2 a equal to 1 plus I by root 2 find the value of find a to the power 1828 how much given अछि देइछि a equal to 1 plus I by root 2 find करिया को देइछि a to the power 1828 1828 रो वैल्यू कैलकुलेशन करिया को देइछि ओके पिले कथा होछि या हमें एटा को फॉर्म अच्छी आम फास्ट देखा पड़ो 1 प्लस आई बाय रूट 2 सपोज 1 टा हूँ ए आई टा हूँ बी तमाने एटा ए प्लस बी रो फॉर्मेट रे अच्छी ए प्लस बी फॉर्मेट रे अच्छी आम बर्तमान ए प्लस बी एटा ला ए एटा ला बी 1 टा को नउची ए आई टा को नउची बी ताले ए प्लस बी हो गला ए प्लस बी रो पावर 1828 कैलकुलेट करिवे 1828 कैलकुलेशन करिवे ए प्लस बी रो पावर 1828 कैलकुलेशन करिया को पड़िबो पिले गोटे सिंपल कथा होचे या ए प्लस बी रो होल टू द पावर 4 हमर मने नाही हमको कैलकुलेशन करिया को पडुची ए प्लस बी रो होल स्क्वायर मन अछि लिखि देई परिबी ए प्लस बी रो होल क्यू लिखि देई परिबी बिना चिंता करी की किंतु ए प्लस बी रो पावर 4 कैलकुलेशन करिया को पड़े ताले मते कैलकुलेशन केमिति करिवि कारण हम ए प्लस बी रो पावर 10 कैलकुलेशन करि परिबुनु ए प्लस बी रो पावर 1828 केमिति कैलकुलेशन करिवु तेनु एरा गोटे काठिकर पाठ होइगला गोटे डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट रहिगला मो पाठ तेनु मते कोन करिया को पड़िबो ना मु जदी ए जो 1 प्लस आई टाकू दीटा टर्म अछि ना ताकू कोनोसी मते कोनोसी उपाय रे गोटे टर्म करि दिए दीटा टर्म को भांगी की गोटे टर्म करि दिए ताहाले मो क्वेश्चन रा सॉल्व हे जिवो ताल मोर बर्तन टार्गेट होउची या ए 1 प्लस आई जो जोड़े टर्म अछि ताकू भांगी की गोटे सिंगल टर्म रे कन्वर्ट करिवि ताले केमिति सिंगल टर्म रे कन्वर्ट करिवि सेटा होची कथा ना एटा को सिंगल टर्म रे कन्वर्ट केमिति करूची देखो पिले गिवन अछि a इक्वल टू 1 प्लस i बाय रूट 2 बर्तमान हम फाइंड करिवि a स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच फाइंड करिवि a स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच ताले a स्क्वायर टा होची 1 प्लस i बाय रूट 2 रो स्क्वायर एटा हला 1 प्लस i बाय रूट 2 ताले a स्क्वायर टा हे जिवो 1 प्लस i बाय रूट 2 रो स्क्वायर a गिवन थिला 1 प्लस i बाय रूट 2 मु बतन फाइंड करूची a स्क्वायर टा फाइंड करूची ताल दिस इक्वल टू
1 plus I रो होल स्क्वायर बाय रूट 2 रो स्क्वायर हला 2 दिस इक्वल टू 1 plus I रो होल स्क्वायर केते 1 रो स्क्वायर प्लस 2I प्लस I स्क्वायर बाय 2 1 plus I रो होल स्क्वायर होची 1 स्क्वायर प्लस 2I प्लस I स्क्वायर 1 I स्क्वायर माइनस 1 कैंसल 2 2 भी कैंसल तो माने फाइनली मिलिला I 1 सहित I स्क्वायर कैंसल होला केमिति ना I स्क्वायर वैल्यू -1 ताले -1 ये +1 कैंसल 2I/2 तो माने कटि गला खाली I रहिला ले बुझी पारिलो एबे ठीक से ता माने A स्क्वायर रो वैल्यूटा होची पिले I A स्क्वायर रो वैल्यूटा हे गला I ता माने ई जो जोडे टर्म थिला ए जोडे टर्म ब्रेक है कि गोटे सिंगल टर्म रे कन्वर्ट हे गला ओके जोडे टर्म ब्रेक है कि गोटे सिंगल टर्म रे कन्वर्ट हे गला ओके ताहले बर्तन हमर दरकार कोन हमर टारगेट कोन ना a र पावर 1828 नाउ a र पावर 1828 इज इक्वल टू हाउ मच ना दिस इक्वल टू a स्क्वायर रो पावर 914 914 2 into 914 1828 2 into 914 2 into 914 equal 1828 तो माने a र पावर 1828 टा होची a स्क्वायर पावर 914 बुझी पारलो समस्ते तो माने वर्तमान हमें a स्क्वायर जगह रे हमें वर्तमान केते लिखि परिबा I लिखि परिबा ऑलरेडी हमें a स्क्वायर वैल्यू को I सॉल्व करिचे ताल दिस इक्वल टू I स्क्वायर सॉरी I रो पावर 914 मु तो मु कहिथिली I रो पावर 914 914 केमिति सॉल्व हबो ना 9114 को हमें 4 रे डिवाइड करिबा ताले एते बड़ नंबर को 4 रे डिवाइड करिया आवश्यकता नहीं केवल 14 को 4 रे डिवाइड कर दबा 14 को जदि हमें 4 रे डिवाइड करूचे ताले रिमाइंडर माने भागशेष 2 रहिबो ताले एटा हे जिवो I स्क्वायर माने आंसर हे गला -1 जने वर्तमान क्वेश्चन पचारिबो सर ए क्वेश्चन टा को आपण आगुरु सॉल्व करिथिले बेलिका आपण a स्क्वायर टा डायरेक्ट बाहर कले ताले मु काहे के a स्क्वायर फास्ट बाहर करबी कारण कोन ना कारण हला एया हमें a रो पावर 1828 कैलकुलेशन करि परिबा नाही काहे ना a टा को फॉर्मेट रे अछि ना a प्लस b फॉर्मेट रे अछि मु एथि पे गोटे हिट एंड ट्रायल मेथड को नै कि a प्लस b रो होल स्क्वायर को फास्ट कैलकुलेशन करि देली ओके कार होल स्क्वायर ना a प्लस b रो होल स्क्वायर फाइंड कली a प्लस b रो होल स्क्वायर फाइंड करि साला परे मु देखि देली a प्लस b रो होल स्क्वायर टा I होउची जेहेतु a प्लस b रो होल स्क्वायर टा I होउची मते कैलकुलेशन करिया पड़ला a रो पावर 1828 तमे एटा को लिखि देली a स्क्वायर पावर 914 914 मु मत I रो पावर 914 केमिति कैलकुलेशन करि जानि छी ना 914 को 4 रे डिवाइड करबी रिमाइंडर जहा रहिबो I रो पावर से आइ जिवो रिमाइंडर 2 रहिला त I स्क्वायर हे गला I स्क्वायर वैल्यू -1 हे गला बुझी हला मो कथा समस्त बुझी पारिलो ना बुझी पारिलोनी ओके तले वर्तमान हम नेक्स्ट को प्रोसीड करबा राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन फाइंड 1 plus I रो पावर 4 into 1 minus I रो पावर 4 is equal to how much find 1 plus I रो पावर 4 into 1 minus I रो पावर 4 is equal to how much write down solve it solve करो देखिबा आंसर केते मिलुची solve करो
ହେଇଗଲା ଦେଖ ତାହେଲେ this equal to 1 plus I ର power 4 into 1 minus I ର power 4 ଅଛି এইটাକୁ ପିଲା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1 plus I into 1 minus I ର whole power 4 this equal to 1 plus I into 1 minus I ର whole power 4 ओके कहना a square into b square थिले ताको आमे लिखि परिबा ab रो whole square similar 1 plus I रो power 4 into 1 minus I रो power 4 एटा को आमे केमिति एक्सप्रेस करले ना 1 plus I into 1 minus I रो whole power 4 ओके पिले दिस इज द फॉर्मेट a plus b a minus b ता माने एटा हे गला a square माने 1 square minus I square रो power 4 this equal to in the place of I square we can write how much minus 1 I square place रे हमें minus 1 लिखिबा तमन this equal to 1 minus of minus 1 रो power 4 this equal to 1 minus of minus 1 हेगला 2 2 रो power 4 2 रो power 4 टा होची 16 तमने 1 plus I रो power 4 into 1 minus I रो power 4 is equal to आंसर हेगला 16 ओके बुझी पारलो समस्ते हाथ टेक जो माने बुझी पारिलो ना आउथर रिपीट करिवि ओके ओके नेक्स्ट राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड फाइंड 1 plus I रो पावर 4 एटा प्लस आ पूर्व क्वेश्चन थला इनटू 1 minus I रो पावर 4 इज इक्वल टू हाउ मच से क्वेश्चन रो सॉल्विंग प्रोसेस ता भिन्न थिला एटा भी अलगा सेटा को जो प्रोसेस रे हमें सॉल्व करिचे एटा को सेम प्रोसेस रे सॉल्व करि परिबा नाही एटा गोटे अलगा प्रोसेस रे सॉल्व करिबा कौन प्रोसेस ना दिस इक्वल टू पावर 4 अछि आर भी पावर 4 अछि पावर 4 सॉल्व करिबा टिके डिफिकल्ट फार्मूला मन न थाई पारे तो आपको पावर 2 रो पावर 2 लिखि दबा त माने एटा को हम एक्सप्रेस करिबा 1 plus I रो होल स्क्वायर रो पावर 4 सॉरी 2 this equal to e also मध्य 1 minus I रो स्क्वायर this equal to 1 plus I रो होल स्क्वायर ता हाउ मच ऑलरेडी हम सॉल्व करि परिबा 1 plus I रो होल स्क्वायर ता होची 1 स्क्वायर 1 plus 2I plus I स्क्वायर रो पर 2 plus 1 minus I रो होल स्क्वायर होची 1 स्क्वायर 1 minus 2I plus I स्क्वायर पर 2 this equal to I स्क्वायर होची -1 plus 1 I स्क्वायर होची -1 plus 1 कैंसल ताले एठी रहिला 2I 2I रो पर 2 एटा रहिला -2I रो पर 2 ओके तमन दिस इक्वल टू 4I स्क्वायर ये मध्य 4I स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ I स्क्वायर we can write how much -1 ताल दिस इक्वल टू -4 this equal to आंसर हला -8 ओके नेक्स्ट राइट डाउन अनदर क्वेश्चन लिखो अनदर क्वेश्चन find
1 plus I ର power 4 into 1 minus I ର power 6 equal to how much? এই क्वेश्चन पूर्व क्वेश्चन भितर फर्स्ट क्वेश्चन भितर फरक अछि कोन ना सेठी बोथ पावर 4 थिला एठी जनगर पावर 4 अछि आउ जनगर पावर 6 अछि तेनु क्वेश्चन टा टिके अलगा हे गला ओके किंतु सेम मॉडल सब सेम एठी थिला आ पूर्व रे थिला 1 plus I ର पावर 4 into 1 minus I ର पावर 4 थिला किंतु एठी अछि 1 plus I ର पावर 4 into 1 minus I ର पावर 6 अछि ओके ताले एई केस रे पिले कोन करिबा ना फर्स्ट पावर को बैलेंसिंग करेबा पावर को आगे इक्वल करेबा केमिति इक्वल करेबा से जिंस बुझौची तो दिस इक्वल टू 1 plus I ର पावर 4 एटा होची 1 minus I ର पावर 6 एटा को लिखि देबी 1 minus I ର पावर 4 into 1 minus I ର पावर 2 1 plus I ର पावर 4 1 minus I ର पावर 4 into 1 minus I ର पावर 2 तमाने जो पावर 6 टा को ब्रेकअप करैची भांगी देइची दीटा टर्म रे ओके गोटे टर्म रे 1 minus I ର पावर 4 आउट लगुछु 1 minus I ର पावर 2 ओके बतन पिले एई दी जगह रे पावर टा सेम हे गला माने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग रु करिथिले सेही क्वेश्चन रो प्रोसेस टा को फॉलो करिबा ऑलरेडी हम सॉल्व करिचे बुझिचे बतन हम दाउ लेखिबा ताले एटा हे गला 1 plus I into 1 minus I रो होल पावर 4 into इला 1 minus I रो स्क्वायर now this equal to 1 square 1 minus I square रो पावर 4 into 1 minus I रो square this equal to in the place of I square हमें लिखिबा -1 I square जगह रे -1 लिखिबा so this equal to 1 minus of -1 into 1 minus I रो होल स्क्वायर ता बतन ब्रेकअप कर देबा 1 minus I रो होल स्क्वायर होची 1 स्क्वायर minus 2I plus I square ओके रो पर 4 थिलाटे बस्तन एटा को हम सॉल्व करिबा ताले एटा 2 रो पावर 4 1 minus of -1 ता 2 this equal to 2 रो पावर 4 into I square minus 1 square cancel कारण I square वैल्यू होची -1 ताले -1 plus 1 cancel हे गला बुझी गला ताले आउ रहला कि -2I into -2I एटा हला 16 into एटा हला -2I this equal to -32I आंसर हला -32I -32I बुझियला क्लियरली दिस इज द -32I लगा एसी लग नेक्स्ट एटा थिला हमर आई रो पढिबा उपरे हमें आई उपरे एतिकी पर्यंत पढी थिले वर्तमान हमें स्टार्ट करिबा एक्चुअली आई रो आवश्यकता कोन थिला काहे की पढुथिली ना आई पढिबार उद्देश्य थिला कॉम्प्लेक्स नंबर रो सॉरी नेगेटिव नंबर रो स्क्वायर रूट कैलकुलेशन करिया पे
बर्तमान आम देखिबा नेगेटिव नंबर रो स्क्वायर रूट टा केमिति कैलकुलेशन होउछि ओके एनी नेगेटिव नंबर रो स्क्वायर रूट केमिति कैलकुलेशन होउछि हम सेही कथरा बर्तमान देखिबा ओके ताले राइट डाउन सपोज पिले मु कहली रूट ओवर ऑफ -9 दिस इक्वल टू हाउ मच रूट ओवर ऑफ -9 ओके दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ये जो -9 अच्छी ताको लिखिदेली -1 इंटू 9 -9 प्लेस रे -1 इंटू 9 बर्तमान एटा को हमें ब्रेकअप करेबा केमिति ब्रेकअप करेबा ना दिस इक्वल टू -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 9 रूट ओवर ऑफ 9 रो वैल्यू हमें जानिचे +-3 +-3 इंटू रूट ओवर ऑफ -1 टा होची i तला आंसर हे गला +-3i ओके ता माने जोठी रूट ओवर ऑफ -1 आसिला ता जगह रे हम लिखिबा +-3i ओके सपोज मु कहिबी रूट ओवर ऑफ -7 दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -7 दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1 इंटू 7 दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 7 दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1 जगह हमें लिखिबा आई रूट 7 तो सिमत रहिबो तला आंसर हे गला +-√7 इंटू आई ता माने पूर्वरु जोटा आमे कहूथिले नेगेटिव नंबर रो रूट ओवर कैलकुलेशन हेई पारिबो नाही वर्तमान स्टेज रे आमे नेगेटिव नंबर रो रूट ओवर कैलकुलेशन करि परिबा ता माने आमे एनी इक्वेशन को सॉल्व करि परिबा ओके आमे आगुरु जस्ट टिके पूर्वरु मु फास्ट इंट्रोडक्शन क्लास रे तुमको एई कथरा कहिथिली कोन कहिथिली ना मु कहिथिली if x square plus 9 is equal to 0 then x equal to how much तमे कोन कहिथिलो ना x square plus 9 is equal to 0 this implies x square equal to -9 this implies x कहउथलो एठी x रे वैल्यू फाइंड हेई पारिबो नाही बोलिगा कहउथलो किंतु जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िले इमेजिनरी क्वांटिटी ऊपर हमर आईडिया आसिला वर्तमान स्टेज रे हमें कहि परिबा नेगेटिव नंबर रो रूट ओवर कैलकुलेशन हेई पारिबो ता माने x रो वैल्यू एठी एग्जिस्ट करिवो हमें आगुर कहउतले x डज नॉट एग्जिस्ट वर्तमान हमें कहिबा x कैन बी एग्जिस्ट by using complex number okay ता माने now x equal to root over of -9 this equal to +-3i okay तन वर्तमान हमें नेगेटिव नंबर रूट ओवर कैलकुलेशन करि देई पारिबा ओके ता माने हमें एनी इक्वेशन को हमें सॉल्व करि देई पारिबा आगुरु हमें एनी इक्वेशन को सॉल्व करि पारु नथलु काहे कि ना स्कूल लेवल रे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा जाई नथिला वर्तमान जेतो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़िले एनी क्वेश्चन एनी इक्वेशन कैन सॉल्व करि देई पारिबा ओके एनी इक्वेशन कैन बी सॉल्व हेई पारिबो किछि असुविधा हबोनी त माने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़िबार उद्देश्य हला एया हमें किछि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को परफेक्टली सॉल्व करिया पे जोटा कि आगुरु करि पारु नथिले ओके देखो नेक्स्ट ताले पिले एठी गोटे पॉइंट आसुची आमे रूट ऑफ नोट 5 रूट ओवर ऑफ एबी इज इक्वल टू
root a into root b. Root ab equal to root a into root b. ओके ताले ए जो कंडीशन टा पिले रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी हबो एटा पिले ऑलवेज नुहे ताले को केस रे रूट ए इंटू रूट बी हबो को केस रे हबो नाही ओके ताहले देखिबा पिले मु गोटे एग्जांपल दउछि ओके एई कंडीशन टा केते बेले हेई परिबो केते बेले हेई परिबो नाही माने रूट ओवर ऑफ ए बी को हमें रूट ए इंटू रूट बी केते बेले लिखि परिबा केते बेले लिखि परिबा नाही मु गोटे एग्जांपल बुझाउछि तुम मानक सुनो पिले सपोज रूट -2 इंटू -3 रूट ओवर ऑफ -2 इंटू -3 जदि आमे एई प्रोसेस टाकू फॉलो करे देखिबा आंसर कौन होउछि किंतु नॉर्मली आंसर कौन होबो तापर मु तुमको कहिबी जदि एई प्रोसेस टाकू एठी मु अप्लाई करे ताले एटा हबो रूट ओवर ऑफ -2 इंटू रूट ओवर ऑफ -3 ओके एया हबो कारण एई प्रोसीजर टाकू एठी फॉलो अप कली एटा लिखिबो नाही एई प्रोसीजर टाकू एठी फॉलो अप कली ताले रूट ओवर ऑफ -2 माने रूट 2i इंटू रूट ओवर ऑफ -3 माने रूट 3i ताले रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 i स्क्वायर तब दिस इक्वल टू i स्क्वायर वैल्यू होची -1 तब आंसर आसी गला -√6 यदि ए प्रोसेस रे जाए तो आंसर होची -√6 माइनस ऑफ √6 ओके किंतु मु नॉर्मली जहा आगुरु शिखिची यदि सेही प्रोसेस रे सॉल्व करे ताल देखिबा कोन होची आंसर मु आगुरु जहा शिखिची जो प्रोसेस शिखिची यदि सेही प्रोसेस रे सॉल्व करे देखिबा आंसर कोन होची मु आगुरु एया शिखिची रूट ओवर -2 इंटू -3 तामने एटा हे गला √6 डायरेक्टली √6 तार -2 इंटू -3 डायरेक्ट √6 किंतु आमे आंसर आ पूर्व आंसर पाइथिले कोन ना माइनस ऑफ √6 ओके बुझियाला तामने एति पिले कॉन्ट्राडिक्शन आसिला गोटे केस रे पाइले √6 गोटे केस रे पाइले -√6 तामने कोउटा ठीक कोउटा भूल ओके ना प्रथम जोटा बुझेइली सेटा भूल एटा होची ठीक ओके ताले काहे की प्रॉब्लम अराइज कला काहे की गोटे ठीक गोटे भूल आसिला तार कारण कोन ना कारण होची रूट ओवर भितरे जो ए बी अछि जदि बोथ आर नेगेटिव हे जिवे ताले एई कंडीशन टा होल्ड करिवो नाही ताले एई कंडीशन टा को केस पई हबो ना बोथ आर नेगेटिव पई हबो नाही आउ ताले कोन केस रहइबो ना बोथ आर पॉजिटिव किंबा तांका भितर गोटे पॉजिटिव गोटे जीरो किंबा गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव हेले चलिबो ओके किंतु ए और बी जो रूट ओवर भितर ए बी लिखा आइछि जदि जोड़े जाक नेगेटिव हे गला ताले से कंडीशन होल्ड करिवो नाही ओके आउ प्रत्येकटा केस पई से कंडीशन टा एग्जिस्ट करिवो आ प्रत्येकटा केस पई से कंडीशन एग्जिस्ट करिवो केवल ए गोटिए कंडीशन पे से एग्जिस्ट करिवो नाही ओके ता माने ताले ए दिस कंडीशन इज वैलिड it is valid write down it is valid when both are not negative or non negative
It is valid when both are not negative or non-negative. Okay. Otherwise କହିଲେ କଣ କହିବି? Or it is valid when at least ଅତି କମରେ one of A or B is positive or zero. ଏଇଟାର ମିନିଂ ଯାହା ଏଇଟାର ମିନିଂ ତାହା. ଓକେ, ମୁଁ କଣ କହିଲି? It is valid when both are not negative, not or non-negative. କହିବା ଯାହା both are non-negative କହିବା ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ଜିରୋ ରହିବା ସେଇଆ କଥା ଏକା କଥା ହେଲା. both are non-negative ମାନେ ଯାହା at least one of them positive or zero କହିବା ତାହା. ଓକେ, ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ରେ root a b is equal to root a into root b ହବ. ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? write down a question. question ହଉଛି ଏୟା, find root over of -2 plus root over of -3 into root over of -5 plus root over of -2 is equal to how much? ଏଇଟାକୁ solve କର क्विक. ଏଇଟାକୁ solve କରିକି finally answer କେତେ ହବ କୁହ. ଓକେ, proceed it. देखो देखो ब्लैक बोर्ड देखो, दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -2 कही हाउ मच √2 i √2 i plus root over of -3 √3i into root over of -5 √5i root over of -2 √2i. this equal to multiply करिया by step this into this into this √2 into √5 এইটা into এইটা into এইটা तापर এইটা into এইটা into এইটা जेमिति नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आमे स्कूल लेवल रे करूचे ताही करिबा. तब दिस इक्वल टू √2i into √5i प्लस √2i into √2i प्लस
√3i into √5i plus √3i into √2i. Okay. This equal to it हैगला √10 I square plus √2 into √2 2 I square plus √3 into √5 √15 I square plus √3 into √2 √6 I square. It है I square. I square place रे -1 लिखिदबा सब कारण हम ऑलरेडी पढ़ीचे वैल्यू ऑफ I square इक्वल -1 ताल दिस इक्वल टू -√10 इटा हला -2 इटा हला -√15 इटा हला -√6. This is the answer. Okay. सबुतर माइनस टे कॉमन नहीं गली √10 √15 √6 √2. This is the answer. Normal multiplication जहाँ complex number multiplication exactly same. There is no difference. कुछ difference नहीं. Okay. Next. Next, a question. If 1 plus I to the power 4, sorry, power n is equal to 1. If 1 plus I to the power n is equal to 1, 1 plus I to the power n is equal to 1. Then find least positive value of n. If 1 plus I to the power n, 1 plus I to the power n is equal to 1, then find least positive value of n. n रो सर्वनिम्न value टा find करिया पड़ी. Then find least positive value of n how much. Okay. n रो सबुठारु कम मूल्य पॉजिटिव हेथिबा दरकार. अच्छा लिस्ट माने सबुठारु कम पॉजिटिव माने स्टार्ट होबो कोठो 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस ए टाइप रे हम कैलकुलेशन करिबा. तो माने n रो वैल्यूटा मिनिमम केते हेले आंसर 1 होथिबो आ सेटा सबुठारु कम वैल्यू होथिबो. जण को सर एटी 0 पुट कर दउ नांती 0 पुट कर देबी 1 प्लस i पर 0 1 प्लस i पर 0 इज इक्वल टू 1 हे जीवो किंतु 0 टा पॉजिटिव नुहे कि नेगेटिव नुहे न्यूट्रल पॉइंट टा हो ना नहीं. तो 1 प्लस i पर n रे मते n वैल्यू कैलकुलेट करिया अछि. n टा 1 हेले चलिबो 2 हेले चलिबो 3 हेले हे परिबो 4 हे परिबो. सबुठार कम मनर 10 होउची 15 होउची ताले सबुठार कम होला 10 ताले 10 टा को हम एक्सेप्ट करिबा 15 टा को एक्सेप्ट करिबा नहीं. ओके. त माने हम सबुठार लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट करिबा. ओके. त लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू टा कोन हो से कतरा डिस्कशन करिबा. ओके. देखो पिले जस्ट टिके आगुरु
ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ କଥା ଏଗେନ୍ ବୁଝଉଥିଲି। ଓକେ, ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ମଡିଫାଏ କରିଦବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଏଇଆ, 1 ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ର ପାୱାର n ଲେଖିଛି, ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବି 1 ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବାଇ 1 ମାଇନସ୍ ଆଇ ର ପାୱାର n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରିଦେଲି, 1 ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବାଇ 1 ମାଇନସ୍ ଆଇ ର ପାୱାର n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଯାହା ଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତାହା ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମଡିଫାଏ କରୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହଉଛି 1 ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବାଇ 1 ମାଇନସ୍ ଆଇ ର ପାୱାର n is equal to 1, then find least positive value of n। ଓକେ, କେମିତି ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସଲ୍ଭ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଓକେ, ଏଇଠି ପିଲେ କଣ କରାଯିବ ନା ଏଇଟା ନ୍ୟୁମରେଟର ବାଇ ଡିନୋମିନେଟର ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଓକେ, এইটাକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରେସନାଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିନୋମିନେଟରରେ ମାନେ ଯୋଉ ହରରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ରହିପାରିବ ନାହିଁ, এইଟାକୁ ମତେ ରେସନାଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ମୁଁ ରେସନାଲାଇଜ କେମିତି କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ରେସନାଲାଇଜ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖ ତାହେଲେ ହେଲା। क्वेश्चन ହେଲା 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई पर n इज इक्वल टू 1। এই जो हर जोटाକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡିନୋମିନେଟର जोटा କହୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ମତେ ରେସନାଲାଇଜ କରିବି। କେମିତି ରେସନାଲାଇଜ କରୁଛି ଦେଖ ନା, ଉପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ତଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବି, ଏଗେନ୍ ଉପରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବି, ହେଲେ ରେସନାଲାଇଜ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई इनटू 1 प्लस आई बाई 1 माइनस ର ପାୱାର n ଦିସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 1 ପ୍ଲସ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ 1 ପ୍ଲସ ଆଇ, ନ୍ୟୁମରେଟର ଟା 1 ପ୍ଲସ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ 1 ପ୍ଲସ ଆଇ ହେଇଗଲା, ଡିନୋମିନେଟର କଣ ହେଇଗଲା 1 ମାଇନସ ଆଇ 1 ମାଇନସ ଆଇ। ଏୟା ଓକେ, ତାହେଲେ 1 ପ୍ଲସ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ 1 ପ୍ଲସ ଆଇ, ତାମାନେ ଏଟା ହେଇଗଲା 1 ପ୍ଲସ ଆଇ ର ସ୍କୋୟାର, এইটা ହେଇଗଲା 1 माइनस आई रो सॉरी एटा 1, एटा हला 1 माइनस आई इनटू 1 प्लस आई, तब एटा हला 1 स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर रो पावर n दिस इक्वल टू। बर्तमान आम सॉल्व करिबा 1 प्लस आई रो होल स्क्वायर, 1 प्लस आई रो होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर टा होची 1 प्लस 2y प्लस आई स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर होची माइनस 1 रो पर n, आई स्क्वायर हला माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, इला हला 2y बाय 1 माइनस ऑफ माइनस 1 2 रो पावर n, 2 टू कैंसल हला i रो पावर n इज इक्वल टू 1 देइछि बा क्वेश्चन रे 1 बलिका, ताले हमें फाइनली पाइले i टू द पावर n इज इक्वल टू 1। हम क्वेश्चन कोन पचारिछि ना लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, n रो सबुठारो कम मूल्यटा केते पिले n जगह रे 0 लिखिबी 1 हे जिवो, i टू 0 टा होची 1 किंतु 0 टा लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू नु है। ओके, i पर 1 टा i स्क्वायर टा माइनस 1 हबोनी, i क्यू टा होची माइनस i टू द पावर 4 टा होची 1, त माने जो 1 जगह रे मु लिखि देबी i रो पावर 4, so this implies n equal to 1, sorry n equal to 4, त माने n रो वैल्यू 4 हेले 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई रो पावर n टा 1 है। ओके, एटा बुझी पारिलो कि नाही कि रिपीट करिया को चाहूचो, को माने बुझी पारिलो हाथ टेक, जदि क्वेश्चन टा बुझी हेची ताले हाथ टेकिबो। ओके ठीक है, ओके
जदि को मानकु क्वेश्चन टाकू आउ थरे रिपीट करिया पई चाहूचो आंसर टा बुझीबा पई आउ थरे चाहूचो तले हाथ टेक ठीक अछि ओके नेक्स्ट राइट डाउन लेखो अनदर क्वेश्चन टाकू हम केमिति सॉल्व करूचे से जिनसटा बुझिबो ओके फाइंड ओके 1 plus I by 1 minus I to the power x is equal to question आउची 1 plus I to the power 1 plus I by 1 minus I to the power x is equal to minus 1 है नहीं देखो if 1 plus I by 1 minus I to the power x is equal to minus 1 then find x is equal to how much okay or find minimum value of x or find minimum value of x पूर्व क्वेश्चन जहा थिला ए क्वेश्चन टा एग्जैक्टली सेम ओके इफ 1 plus I by 1 minus I to power x is equal to minus 1 then find minimum value of x एठी पचारिनी least positive value of x एठी पचारुची minimum value of ओके n रो minimum value टा how much बोली का पचारुची हे गला देखो सेम क्वेश्चन एटा को रेशनलाइज करूथिले आंसर सेठी थिला 4 सॉरी 1 एठी अछि -1 सेठी n वैल्यू होतला 4 एठी n वैल्यू हे जिवो -2 x र वैल्यू हे जिवो सॉरी x र वैल्यू हे जिवो 2 काई जस्ट सेही स्टेप पुरु मु कहि कि तुमको आसीथिले आंसर ता हबो 2 बोलिका ओके सेही क्वेश्चन टाकू मु खाली जस्ट टिके मॉडिफाई करथिले आउ किछ ना ओके राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन पिले एठी तुमको आउ गोटे जिनिस बुझौची जोटा कि दरकार अछि कोन नोट लिखि दियो समेशन tn आर मीनिंग ता कोन 1/n समेशन तोरा सिग्मा कहूचो सिग्मा 1/n tn आर मीनिंग ता एक्चुअली कोन ओके
पिले आर मीनिंग हैला n जगह रे हमें 1 पुट करिबा 2 पुट करिबा 3 पुट करिबा 4 पुट करिबा अप टू n पुट करिबा आ ताकू एडिशन फॉर्मेट रे लिखिबा ओके केमिति हबो ना दिस इक्वल टू t1 प्लस n जगह 1 पुट कले t1 हला t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस डॉट डॉट tn हम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू tn एटा को मु तुमको बुझौची वर्तमान देखो मन कर कहबी सिग्मा 1 ओवर 5 tn सिग्मा 1 ओवर 5 tn ओके वन ओवर 5 tn ता माने कोन ना n जगह रे हमें एडी समेशन सिग्मा 1 ओवर 5 tn लिखिछि ता माने n जगह रे 1 लिखिबा 2 लिखिबा 3 लिखिबा 4 लिखिबा 5 पर्यंत जीवा ता माने एटा कोन हेइ जीवो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 okay this is the sigma 1 over 5 tn रो मीनिंग ताला ए वर्तमान पिले एई कांसेप्ट को बेस करी कि मु गोटे क्वेश्चन लिखुची राइट डाउन समेशन 1 over 50 I to the power n is equal to how much? And n equal to 1 over 50. Summation n equal to 1 to 50 I to the power n equal to how much? Question now is summation n equal to 1 to 50 I to the power n is equal to how much? Okay. कौन करिबा सेम एज ओके n प्लेस रे हमें 1 रो अप टू 50 जांग पुट करी करी चलीबा तबर 1 लिखिबा 2 लिखिबा 3 लिखिबा 4 लिखिबा अप टू को पर्यंत जिया 50 पर्यंत जिबा ओके त माने दिस इक्वल टू I to the power 1 n जगह 1 लिखिली I to the power 1 n जगह 2 लिखिबी I square 3 लिखिले IQ I4 I5 I to the power 50 सीरीज टा बतन एया हे गला I to the power 1 रो I to the power 50 आर आंसर कैलकुलेट करो केते होउची ऑलरेडी आपको पढिथिली पूर्व क्लास रे चारि चारटा टर्म रो सम टा 0 होई जियो बेलिया कहउथिली कारण I स्क्वायर IQ I4 मु कहिथिली सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ पूर्व क्लास रे पढिथिली सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ I इज इक्वल टू 0 सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ I इक्वल टू 0 लिखा पूर्व क्लास रे नोट दे की पढिथिली बतन एटी I to the power 1 रो I to the power 50 अछि ओके सॉल्व बिट केते आंसर बाहर करो जल्दी
नो देख जहा आंसर देलो ताहा नुहे कहीं आई टू द पावर 1 रु आई टू द पावर 2 3 4 5 6 अप टू 50 टा टर्म अछि 50 टा टर्म ओके आमर कंटिन्यूअसली चारिटा टर्म रो सम टा 0 तो माने आई रो पावर 1 आई रो पावर 2 आई रो पावर 3 आई रो पावर 4 ए जंगे गेला 0 अगेन आई रो पावर 5 आई रो पावर 6 आई रो पावर 7 आई रो पावर 8 ये हेगला 0 अगेन आई रो पावर 9 आई रो पावर 10 आई रो पावर 11 आई रो पावर 12 ये मध्य 0 हेगला एई भलिया चारिटा 0 आउ चारिटा 0 आउ चारिटा 0 एई भलिया चार चारटा 0 हे चली ओके तार टोटल ऊपर मोर केतेटा टर्म अछि ना टोटल ऊपर मोर 50 टा टर्म अछि तामने जदि चारिटा को 0 कर दिए ताले केतटा 0 प्रोड्यूस करिवो केतटा 0 रिप्रेजेंट करिवो दब्बो क्वेश्चन ना देयर आर 12 0 आसीबो 12 को 48 माने 12 टा 0 आसीबो 12 टा 0 आसिला परे अगेन जोडे टर्म रही जीवो मु कहितली से जोडे टर्म आइदर स्टार्टिंग रु नहीं पारिवो नहले एंड आडू नहीं पारिवो जोडे टर्म जदि आमे एंड आडू नउचे ताहले हमकु डिफिकल्ट हबो पुनी सॉल्व करिया को तेनु आमे एंड आडू न नहीं आमे कोन करिबा ना स्टार्टिंग रु दीटा टर्म नहीं जीवा जेतिकिटा टर्म बळिबो मु एई कथा कहितली जेतिकिटा टर्म बळिबो सेतिकिटा टर्म आंसर हबो टोटल 50 टा टर्म अछि 50 हरण 4 50 डिवाइडेड बाय 4 50 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर आसीबो भाग शेष आसीबो 2 तेनु स्टार्टिंग रो दीटा टर्म हबो आंसर किंबा एंड रो दीटा टर्म हबो आंसर आइदर एंड टर्म नहीं पारो एंड टर्म नेले तुमको सॉल्व करिया पड़िबो स्टार्टिंग टर्म नेले सॉल्व करिया पड़िबो नाही ओके तेनु आमे कोन करिबा ना स्टार्टिंग रु जोडे टर्म नहीं जीवा से जोडे टर्म हबो आंसर तमन आंसर हे जो ए जोडे टर्म तमन आंसर हे जो आई स्क्वायर वैल्यू होला -1 जदि हमें लास्ट आडू जोडे टर्म नबा तला आई रो पावर 50 ता पूर्वटा थिबो आई रो पावर 49 आई रो पावर 49 प्लस आई रो पावर 50 एटा को एगने सॉल्व करिया एटा को एगने सॉल्व करिवा 49 को 4 रे डिवाइड करिबी 49 को 4 रे डिवाइड कले रिमाइंडर माने भाग शेष 1 रहियो तेनु एटा हबो आई रो पावर 1 प्लस 50 को यदि 4 रे डिवाइड करा जाए भाग शेष रहिबो 2 तेनु एटा हबो आई स्क्वायर वैल्यू -1 जानिछो ताले आंसर होला आई -1 ताले मु काहे की लास्ट आडू पेयरिंग नेबी लास्ट दीटा टर्म काहे की नेबी पुनी अगेन काहे की सॉल्व करिवि ताले मते कोउटा इजियर ना स्टार्टिंग रु दीटा टर्म नबाडा इजियर स्टार्टिंग रु दीटा टर्म नले आमे डायरेक्टली आंसर पाइबा लास्ट आडू दीटा टर्म नले आमे डायरेक्टली आंसर पाइबानी अगेन ताको सॉल्व करिवा ओके क्लियर पूरा बुझियला तेनु आमे सेति पे फर्स्ट दीटा टर्म नउछु आई प्लस आई स्क्वायर हबो फाइनली आंसर ओके बुझियला समस्त बुझी पारिलो जो माने बुझी पारिला हाथ देखो यदि न बुझी पारिचो ताले मु रिपीट करिवि ओके आज पे एतिक नेक्स्ट क्लास रे हमें पुणी अगेन एई जगह रो स्टार्ट करिवा ओके।